Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Don't talk, children, don't talk. Yes, ma'am. Just wait. I'm waiting for you all to join. Good afternoon, ma'am. Please mute your mic, children. So, children, yesterday we had completed some of the topic of this lesson, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which topics we have completed? Ma'am, red Natural data book Park, Wildlife completed. Sanctuaries, Flora and Fauna, Red Data Book. Red data book. Do you find any problem in all these topics? No, ma'am. किसी को कोई दिक्कत है? No, ma'am. No, ma'am. Participants, No, I'm ma'am. asking you all. Okay, ठीक है? So today we will have a quick look on that topic and then we will move forward to the other topics. First of all, we have discussed natural parks and wildlife sanctuary. Can anybody tell me what is the difference between natural park and wildlife sanctuary? Ma'am, Natural Park is Area. whereas Wildlife And Sanctuary. natural park is a small area and wildlife sanctuary is a big area. Protected area.
Anybody else? कोई और बोल सकता है? Wildlife sanctuary is a protected area which is larger than national parks and animals can freely move. Ma'am, wildlife sanctuary and natural parks are different on the basis of their area and way of protecting animals. Okay, very good. ठीक है. Then we have discussed about flora and fauna. Any problem in understanding this topic? No, ma'am. No, Flora ma'am. refers to Ma'am, plant life. Plants. Plant life. Plant life. and fauna refers to Animals life. Life. Animals life. Animal life. Flora refers to animal life. yes, animal life. Then in the red data book, can anybody define red data book? Red data book को define कर सकते हो? Ma'am, books published by the IUCN, these contain a list of threatened plants and animals. They are classified according to the degree of perceived risk of their existence. Ma'am, books They are published by providing the us this. IUCN, these contain a list of threatened plants and animals. They are classified according to the degree of the perceived risk to their extent. Okay, very good. So this IUCN has produced or it is releasing or maintaining a record of international animals and whose life is threatened, and they are just sorting it out. They are keeping a record, and then it is published as in the form of red data book. Then in this red data book, which type of animals are enlisted? किस तरह के animals enlisted होते हैं? Which are Ma'am, which are going to extinct. Ma'am, Ah. extinct, endangered, and vulnerable species. Ma'am, Yes, very endangered good. species and vulnerable Endangered and vulnerable species of animals are enlisted in this red data book. Extinct, you all understand what is the meaning of extinct? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. A plant or We an don't know. animal which is now not found anywhere in the world is known as extinct. Which is not found. We look. What is this endangered? Endangered किसको बोलते हैं? Ma'am, a species of plants or Yes, animals ma'am. which Species is of plants at or high animals risk which are in of high risk extinction in the of near extinction. future. In the near future. Which has a high risk of extinction. Then vulnerable species. A plant or an animal which Species runs of the risk of animals or soon plants which are becoming in endangered high and risk of finally extinction extinct in medium in the term. times to come is known as vulnerable. Okay. So these points are clear. We will move to a new topic today, that is endemic species. Listen very carefully. Endemic species are unique to a particular geographic location. इसका मतलब क्या हुआ? Endemic species केवल एक ही location में पाए जाते हैं और because that environmental condition is suited for them. अब उस वेजिटेशन से वो उस पर्टिकुलर रीजन से वो लोग कहीं दूसरी जगह सरवाइव नहीं कर सकते. इट कैन नॉट सरवाइव अदर देन that particular zone or particular region. So they are known as endemic. And like you understand in this way कि अगर मान लो polar bear वो अगर हम plains में रखना चाहें तो can they survive here? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. And because it is located in cold regions. Ma'am, because they live in cold regions. Cold region, yes. Yes, and it is only its body is also made like that. उसका body भी उसी तरह का बना होता है कि वो उसी region में survive कर सकता है. But polar region can be there in the North Pole as well as South Pole because these two regions are similar temperature, but they cannot survive in other regions. तो ये endemic species polar bear से भी special होते हैं
क्योंकि ये पर्टिकुलर स्मॉल रीजन में ही सरवाइव कर पाते हैं, बिकॉज दे कैन ब्रीड एंड दे कैन just have all sorts of you can say environmental condition, जहां उसको पाया जाता है वो वहीं पाया जाता है। तो जहां पर उसको मिलता है, wherever it gets that type of environmental condition, this endemic species are found over there. So कुछ example आपके बुक में दिया हुआ है, like orange breasted sunbird is endemic to Fynbos. Fynbos is a region, and this implies that it is exclusively found only in Fynbos vegetation type of southwestern South Africa. मतलब southwestern South Africa के southwestern part में this orange breasted sunbird is found, and it is its body is suited, or it is just habituated to live in that region only, and other regions are not suited for it. Then lion-tailed macaw. Picture is given. The lion-tailed macaw is endemic to the Western Ghat of Southwest India. So it will not be found in other regions. So these endemic species are constricted or restricted to a one area. That is why what will happen, their extinction species is not being found in anywhere else. So we have to note down, or we have to list down which are the you can say reasons for their extinction. और सपोज कर लो अगर वो एक छोटे एरिया में ही पाए जाते हैं, तो अगर वो उनका एंडेंजर्ड होगा या उनका नंबर लेस हो जाएगा, तो उसका स्पीशीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस तरह का स्पीशीज और कहीं नहीं पाया जाता। तो what are the reasons for their current rate of extinction? There are 4 reasons. What are they? Loss of habitat, over-exploitation, introduced species, and ecosystem disruption. These are the 4 reasons for its extinction. Extinction का 4 reason. क्या क्या है? Loss of habitat. Now children, what do you understand by loss of habitat? इसका मतलब क्या होगा? जहाँ habitat loss means वो जगह जहाँ पहले से जानवर रहते थे उनका where the species live is lost. Ma'am, the area or the plant or trees, because birds survive on what? The trees or the forest vegetation, इसी पर birds और animals रहते हैं ना? They are not very friendly to live or in the. Pardon? मैम एक पर्टिकुलर एरिया पे एडेप्टेड एनिमल को वैसा हैबिटेट नहीं मिलेगा। हाँ, तो एक पर्टिकुलर एरिया का अगर ट्रीज और वेजिटेशन को खत्म किया जाएगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? उसका नंबर धीरे धीरे कम होते होते और वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको रहने का प्रॉपर जगह नहीं है. इट इज नॉट गेटिंग प्रॉपर प्लेस टू लिव because the animals and birds like to survive in the forest because that is their home, or trees that is their home, and they also feel protected over. ठीक है, जैसे अगर हम लोग अपने घर में प्रोटेक्टेड फील करते हैं ना, तो अगर मान लो हमारा घर डूब जाए या खत्म हो जाए तो हम लोग अपना ये खो देंगे. वी विल बी जस्ट अनप्रोटेक्टेड. हमको कोई भी आकर मार सकता है या कुछ भी मेरा सामान ले जा सकता है. दीज ऑल अदर थिंग. तो इन दैट सेंस इफ वी आर टॉकिंग, तो लॉस ऑफ हैबिटेट मींस दे बिकम होमलेस. उनका घर खत्म हो जाता है. तो अगर घर खत्म हो जाएगा तो वो दे विल नॉट बी हैप्पी एंड दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ओवर देन. और ये दिस कैन हैपन ड्यू टू pollution also. Pollution के कारण भी होता है, या over exploitation of resource. Over exploitation का मतलब क्या हुआ? अगर उस स्पीशीज को उस एरिया में ज्यादा किल किया जाए, ज्यादा उसको मारा जाए या ज्यादा हंट किया जाए, then what will happen? It will get, it will the number of that species will reduce.
उसका स्पीशीज का नंबर रिड्यूस हो जाएगा एंड अ टाइम विल कम if this practice is carried out, then the time will come when the number will become very less and it will reach to that end level of extinction. And the example is passenger pigeon. Then comes the third point, that is introduced species. Now children, agar ek example lo isko samajhne ke liye, your home is there, 4 members are living in that home. अगर आप 4 or 8 members more come to your house to live, then what difficulty you will face? बोलो. अगर 4, 5 लोग 6 लोग अगर एक साथ रहने आपको बाहर से आ जाएं, तो आपको कुछ डिफिकल्टी होगी. Yes, ma'am. Congested हो जाएगा. Living difficulties. कम हो जाएंगे. It is congested. You will have to share everything. Maybe you will have to compromise. Compromise भी करना पड़ेगा कुछ में. जैसे मान लो रिसोर्सेज में आपको फूड स्टफ्स है, जो आपको अच्छा लगता है तो 2 में शेयर करोगे और 4 कजन ब्रदर सिस्टर में शेयर करोगे, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे कम अमाउंट होते जाएगा. इन दैट सेम वे, इफ इन अ एरिया one species is living very comfortably और दूसरा स्पीशीज भी उस एरिया में आ जाए रहने के लिए, तो क्या होगा, देयर विल बी distribution of resources. There will be distribution of resources and might be that the original one will get very less resource and they might die also. इतना कम रिसोर्स मिलेगा कि उनको खाने के लिए नहीं होगा और धीरे धीरे उनका नंबर कम होते जाएगा. So is this point clear, children? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, ecosystem disruption. This is very important. Ecosystem disruption का मतलब होता है हर एक एरिया का एक अपना इकोसिस्टम होता है, एक अपना फूड चेन और फूड वेब होता है और उसका क्लाइमेटिक फैक्टर मिलकर वो इकोसिस्टम बनाता है. अगर मान लो किसी एक का नंबर ज्यादा हो गया या कम हो गया तो क्या होगा, दूसरे पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा फूड चेन में? पड़ेगा. तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो ओरिजिनल वहां के लोग ये होंगे, एनिमल्स और बर्ड्स होंगे, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने के कारण उनका नंबर धीरे धीरे डिटोरिएट करेगा. एंड इन द टाइम विल कम that it may go to extinction, और वो ऐसा टाइम भी आ सकता है कि वो extinct हो जाए. So these factors, keeping in mind these factors, the government is making certain projects or certain programs are made. What are those programs? It is concerned including Project Tiger, then Natural Camp and Jungle Lodges. These are created over there in those areas and making people aware of wildlife. Wildlife के बारे में people को awareness देना होता है और वहां पर tourism को promote करना होता है और ये जानकारी देते हुए कि इस एरिया में ये particular vegetation को या particular animal और bird को hunt नहीं करना है. We don't have to kill them. We don't have, but we can enjoy the nature over there. तो इस तरह का the government is making the policy or the government has made this type of policy to promote. So is point is clear, children? ये point clear हो गया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Point is clear. इंट्रोड्यूस स्पीशीज के लिए कुछ एग्जांपल है क्या? हाँ बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हो? ये इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज जो टॉपिक है उसके लिए थोड़ा एग्जांपल है क्या? इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज में कुछ भी आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. इंट्रोड्यूस किसी एक स्पीशीज को नहीं ना किया जा सकता है. मान लो कोई एक एरिया में जहाँ आपको सिम्बॉक्स वेजिटेशन में
ऑरेंज ब्रेस्टेड सनबर्ड वहां पर रह रहे हैं, और वहां पर कुछ क्रेन्स का वेराइटी या कुछ डक्स का वेराइटी या कोई भी वेराइटी, अदर वेराइटी जो एक साथ वहां पहुंच जाए, क्योंकि दिस इज नेचर, वी कैन नॉट फोर्स देम, ये नेचर में होता है, तो वी कैन नॉट फोर्स देम टू डू। बट ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो नियर बाई एरियाज में स्कैर्सिटी ऑफ फूड और शेल्टर है, तो वहां से कुछ बर्ड्स ट्रैवल कर गए दूसरे जगह, तो वो इसी वेजिटेशन में आ गए, तो इसी वेजिटेशन में आ गए, सो देयर विल बी अ शेयरिंग, वहां शेयरिंग होने लगेगा। ऑल द रिसोर्सेज, हैबिटेट, food, water, everything, what they are utilizing. So we cannot give any example of colonization. ये method जो introduced variety का है ना, इसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता कि कौन सा आता है किस एरिया में, ये कभी भी हो सकता है, एनी टाइम इट कैन। जैसे सपोज कर लो कोई मिस हैपनिंग हुआ किसी एरिया में और वहां फॉरेस्ट फायर, तो फॉरेस्ट फायर में क्या करते हैं बर्ड्स, एनिमल, दे ट्राई टू एस्केप, और लार्ज नंबर में नियर बाई एरियाज में अगर वो चले जाएंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जो नियर बाई एरिया होगा दैट विल हैव लार्ज पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर वैरायटी और मिक्स्ड वैरायटी। कॉलोनाइजेशन कोई जरूरी नहीं है कि एक वैरायटी का ही बर्ड एनिमल वहां ट्रैवल करे या वहां आ जाए, वो कोई भी वैरायटी का आ सकता है, ठीक है। सो वी कैन नॉट गिव एनी पर्टिकुलर एग्जांपल, वो इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड्स हो सकता है, बैट हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, एनीबॉडी ma'am. कुछ पूछना चाह रहे हो? No, ma'am. No, ma'am. चलिए अब हम लोग बात करेंगे डू यू नो में। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाउ अ पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ बर्ड will insect the will infect just affect the growth of plants or trees। तो डोडो एक बर्ड था, एक एंडेमिक वेराइटी ऑफ बर्ड था जो कि मॉरिशस आइलैंड में पाया जाता था। This was a variety endemic to Mauritius Island, and it became slowly and gradually it became endemic, extinct, sorry, वो extinct हो गया। Then the growth of a tree which was there was stopped। एक वहाँ एक species of tree था that stopped its growth, तो ट्री का नाम नहीं मेंशन्ड है। So why it stopped? Due to dodo। डोडो के कारण वो ट्री क्यों स्टॉप हो गया? क्योंकि डोडो के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सीड जब निकलता था, डोडो उसका सीड खाता था, डोडो वाज अ टाइप ऑफ बर्ड, तो वो सीड उसका खाता था, और जब वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फेशियल मैटर में निकल कर सॉइल में जाता था, then that seed used to germinate of that particular tree। So this happening is stopped due to extinction of dodo। अब क्या हुआ, कुछ साल पहले ये पता चला है the same thing can be done by Turkish this turkey, domestic turkey। टर्की के इस समय भी कुछ सीड उसका डोरमेंट स्टेज में होगा जो टर्की खा लिया होगा, और टर्की के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जब ये सीड निकला तो अगेन दैट ट्री डेवलप, and that tree is now known as dodo tree। अब उसका नाम मॉरिशस में क्या रखा गया है, dodo tree, because it has again started germinating by the help of this domestic turkey। and this turkey, ये कोई जानबूझकर किया हुआ एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये अचानक से ऐसा हुआ, ठीक है। so this topic is clear? Do you know, समझ गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then now we come to the topic migration। Now what is the meaning of migration? Migration का मतलब Ma'am, क्या it is a movement of any species like animals and birds from one place to another place।
In search of food and in search of breeding ground. One place to the other place. It is not very simple. Animals or birds from. What do you want to tell? Ma'am, it by search of food and shelter. Food, shelter and breeding ground. So reproduction के लिए भी. तो वो and it is not very less distance, but larger distance they travel, and this is due to a type of tissue, tiny tissue present between eyes and their brain. ये एक tiny tissue है जिसके कारण birds migrate करते हैं and they follow the earth magnetic field and they travel to same place according to the movement of the earth. जब आपको revolution होगा, rotation या revolution होगा, तो what will happen? The season will change due to revolution. So this tiny mass of tissue will force them to move in that direction. वो tissue earth magnetic field के कारण उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर उसको पता है कि उसको एनवायरनमेंट प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन मिलने वाला है. एंड दिस माइट बी अप टू 64,000 किलोमीटर. 64,000 किलोमीटर तक भी जा सकता है और फिर रिटर्न बैक कर सकता है टू इट्स ओरिजिनल प्लेस. सो दिस इज माइग्रेशन. Then reforestation. Next topic is reforestation. Now children, if we are facing lots of problems due to deforestation, why not think just now to plant more and more trees so that in future when you will grow older, जिसके पास means है, I'm not telling everyone, जिसके पास means है वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए और वो आपको जब आगे चल के that will grow into a forest. Then after that, recycling of paper. एक topic है recycling of paper. Children, we waste so much paper every day. That should be stopped. Why? Because paper can be recycled, reused and reduced. The use can be reduced. Nowadays, we are using so many datas in our mobile, storing it in the mobile. So the use of paper has deteriorated, but still we need that. जैसे suppose कर लो आप अपने level पर क्या कर सकते हो? अभी आप घर में हो, जितना भी old copies है, math practice के लिए या rough work करने के लिए, जितना भी old copy है, आप उसको use कर सकते हो for your rough work. And don't throw it away. और जब वो fill up हो जाएगा, then you send it for recycling. जो रद्दी वाला आता है garbage collector, you have to just give it to them so that it can be reprinted. So children, it has been estimated that recycling of even half of the world paper would avoid the deforestation of 20 million acres. That is 80,000 kilometers of forest land. अगर हम हाफ भी वर्ल्ड का पेपर को रिसाइकिल करने में डालेंगे तो 20 मिलियन एकड़ का पेड़ को बचाया जा सकता है. That can be saved. So just think that we don't have to waste our paper. Clear? Yes, ma'am. Any question? Ma'am. स्क्रैप पेपर का मतलब समझते हो? कैसे बचेंगे? Pardon? मैम पेपर्स को रिसाइकल करने से ट्रीज कैसे बचेंगे? रिसाइकल करके आप उसको रीयूज करोगे ना, तो जो लोग रिसाइकल्ड पेपर खरीदेंगे तो वो न्यू पेपर तो नहीं खरीदेंगे, रिसाइकलिंग में उसका यूज हो जाएगा. तो जो उस काम के लिए हम पेपर का यूज करेंगे वो कम हो जाएगा ना. जैसे सपोज कर लो रिसाइकल की और रिसाइकल में डाले तो आप देखते होगे पेपर का फिर से रिसाइकलिंग करके और आपको कार्टन्स बन जाता है, जो भी उसका यूज हो जाएगा. तो उसके लिए पर्पसली अगर हम पेड़ को काटेंगे तो वो क्या होगा, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा ना.
तो अभी देखते हो हम लोग पैकेजिंग मटेरियल में ज्यादा थिकर पेपर यूज करते हैं, तो वो रिसाइकल होकर आपको यूज में आ जाता है। ठीक है, और कुछ? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? मैम, व्हाट इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? अब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो, अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और हमेशा वो किस पोजीशन पे रहता है? नॉर्थ साउथ। टिल्टेड पोजीशन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, और हम लोग खड़े क्यों हो पाते हैं? Why can we stand? Because of Due to gravitation. Due to gravitational force. The earth magnetic field which is acting from the above. ऊपर से वो अपनी तरफ खींचता है और नीचे से gravitational force खींचता है. So this creates that type of environment that makes us stand on the surface of the earth. Otherwise, we would have floating in the air. यही बैलेंस के कारण, और कभी भी आप जब ग्लोब देखते हो तो वो थोड़ा टिल्टेड क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. हमेशा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करता है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वर्क करता है. सो अर्थ इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज ह्यूज मैग्नेट which attracts objects. Chalo, anybody please read this topic, endemic species. Ma'am, may I read? Ma'am, may I read? कोई भी read कर सकता है. Start. Endemic species are unique to a particular geographic location, such as a specific island, some habitat types, or a nation or some other well-defined zone. To be endemic to a place or area means found only in that part of the world and nowhere else. For example, the orange-breasted sunbird is endemic to fynbos. This implies that it is exclusively found only in the fynbos vegetation type of southwestern South Africa. Lion-tailed macaw is endemic to the Western Ghats of southwest India. The extinction of endemic species have many causes. These include pollution and natural disasters. However, it is human action that is responsible for the four main causes of current rate of extinction. Loss of habitat. It occurs when an environment is alterated so much that certain organisms cannot longer survive there. Habitat loss may occur due to pollution and or destruction of a habitat. Overexploitation occurs when living organisms are hunted to such an extent that their population is not able to maintain itself, even if it was initially abundant. For example, passenger pigeons, once numerous across North America, were hunted for food and are now extinct. Introduced species. Colonization, that is, introduction of new species, can have a significant impact on endemic species. This is because the new species may prey on or compete for resources with the existing species. Ecosystem disruption. The living organisms in an ecosystem are often linked together. This link might be a food chain, the pollination of the plants by insects, bats, and birds, or the shelters that provide for certain animals. Because of these links, the reduction in the population of one species can affect the population of other species. The project and programs concerning nature and started by the Indian government include Project Tiger, natural camps, and jungle lodges. These have been organized to promote wildlife awareness among people. These projects not only help in preserving our natural heritage but also encourage ecotourism.
Do you know? Dodo was a bird that was endemic to the island of Mauritius. The extinction of dodo also had an impact on trees on the Mauritius island. Scientists have found out that there is a species of tree in Mauritius whose seeds have stopped germinating 300 years ago. In fact, dodo ate the fruit of this tree, and it was only by passing through the dodo's digestive system that the seeds became active and could grow. Luckily, some people discovered that domestic turkey could also do the same sufficiency. They have used turkey to begin a new generation of that tree. It is now called the dodo tree. Migration. Migration is the periodic movement of a species of animals or birds from the place where it has been living to a new area and its subsequent return journey back